وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon me, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him. Subhanallah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Inshallah Azza wa Jal, today in this brief khutbah talk, we will discuss some very important and relevant matters that we need to deal with on a very regular basis. And that is to clip your nails, nakhun trashna, and to remove hair from the body or haircut or even hairstyle. But these are relevant issues and people don't have guidance on these issues. It is mustahab to clip your nails on Friday, Juma. Juma के दिन नाखून तराशना मुस्तहब है. But if they have become too long, then don't wait for Juma. Because keeping long nail is not good, because they become cause of decrease in risk. If you keep long nails, तो वो risk में कमी का सबब बनते हैं. So, in order to have barakat in your risk, make sure that you cut them before they become very long. It is mentioned in a da'if hadith that Hazur Aqdas sallallahu alayhi wa sallam used to trim his mustache and clip his nails before going for Juma. Subhanallah. So this becomes the sunnah of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, so that we must also practice this. Okay, there is a sequence in clipping your nails of your fingers and the toes. The sequence, which is much easier to remember, is to start with the Shahada finger of your right side, this finger. First this, then this, then this, then the small finger. So 4 fingers, nails are trimmed. Then start from the small finger, moving this way, and lastly the thumb. And now what is left
is the nail of your right thumb. So lastly, you clip the nail of your thumb. So in this way, what you have done, you have actually started with the right hand and you ended with the right hand. So this way, and then finally, okay, as far as the toes are concerned, paw ki uliyan. In English, you can't say fingers of the foot because they got different terms, toes, and fingers for the hands. So the toes. You start from the small toe of the right foot. So in sequence, come to the big toe. And then for the left foot, start with the big toe and end with the small toe. So that's the sequence of the foot, how you clip your nail. So hands is a different sequence and the foot is different sequence. So we should know these things because when we do something which is necessary to be done, we must also get sawab with it. And sawab you will get if you do it according to the way that the Sharia has taught us. The way of the Sunnah, the way of the Salihin and the pious people. If a person is in war situation, there's a war between Muslims and Kuffar and he's in the battlefield. For him it is mustahab to keep his nails long and his mustache long. So in this way he'll make his looks scary. And that's good. When you are in the battlefield fighting with the enemies, you must look dangerous. You must look scary. Normally, if a person comes in front of you, long nails, long mustache, the children will get scared. He's a scary looking person. So now in a normal society, civil society, you don't need to be looking scary. But in the battlefield, the enemy must see you and he must think this man is very dangerous. It's a day you have allowance and different rules, but in normal life you have different rules. Okay. Every Friday, as we said, you should clip your nails or after 2 weeks, after 15 days. And the maximum limit is 40 days. After that, if you do not clip your nails, it is prohibited. It is najais. It is najais to keep your nails growing till 40 days. Till after 40 days. So then it becomes wajib to cut them. And same rule is applied for the mustache. And same rule applies for the hair under navel. Puberty hair under navel. When people grow up, they become adults. They have hair growing under navel and under arms. Armpit hair. The limit for everything. Nails, mustache, underarm hair, under navel hair,
is 40 days maximum. Thereafter, person becomes sinner if he does not remove those hair and the nails. So these limits we should know. To trim the moustache is sunnah. It is better that your moustache are the size of your eyebrows. Or if it can be smaller, that's also fine. But make sure that they're not overlapping from your upper lips. So their limit is, even if you want to keep longer hair, try to move them this side, as some people keep their moustache this way. But make sure that they're not overlapping. So this is the way that one should keep his moustache. And to keep longer and fatty moustache is allowed as long as the hair are not overlapping the upper lips. As Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala used to keep his moustache this way. So some pious people's way and practice is also there. And also in one narration it is mentioned to shave moustache. So that means shaving of moustache is also allowed. As some Sunni scholars used to do that. For example, Qaid Ahl Sunnat Hazrat Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah Ta'ala used to shave his moustache completely. So that's jais. But these days, it has become symbol of a particular group who are not Ahlul Sunnah, who are Bad Mazhab. In fact, if people want to talk about them, they don't even take their names. They just say, so that others understand who are you talking about. People who shave their moustache. Now, since it has become a symbol of a corrupt sect, we should take the other option, and that is to keep some amount of moustache, not totally shaved. Okay, but options are there. To keep full beard, longer beard, is the sunnah of all Anbiya. Subhanallah. No Nabi was clean shaven. No Nabi had shorter beard. Every Nabi had full length beard. Subhanallah. Full length beard is explained in our Sharia is fistful. To shave it or to keep it less than fistful is haram. I know a lot of our people don't practice, but we shouldn't hide the rules. Some people might not like it because they're not practicing. But they should be reminded the rules of Sharia. They should be told the rules of Sharia. If not today, maybe Allah will give them tawfiq tomorrow. And they'll make tawbah and start keeping beard. Why must we hide the rules of Sharia? Because so many people are not practicing. Yes, if it becomes longer than the fistful, then
it can be trimmed from the bottom. So the sunnah is fistful. And people who keep their beard too long, it also doesn't look good. And many wise people have said that the foolish people keep their beards too long. There's a story, just to give a lesson, I read in some of the old Persian book, that some wise person said that people who keep their beards too long, covering their stomachs, reaching, lower part of their stomach, they are foolish people, they're unwise. So a person went to this kind of person who had a very long beard. He told him, you are foolish. You need to cut your beard, after the fistful. So he said, no problem. So he took his beard in his hand, and the lamp was burning. So he said, no, I'll fix it right now. So he took the extra close to the lamp. So now the hair are burned. But when the heat reached his hand, he quickly pulled his hand and his whole beard got burnt. Allah. So the person said, see, these wise people are right. The people who keep very long beards, they are foolish. You are foolish because you ended up burning your whole beard. It's just a story, but there must be some truth in it. Wise people, when they tell you something, their experience is part of it. So keep the sunnah way, keep the way Anbiya alayhi salam kept, keep the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kept, keep your beard the way Sahaba Ikram and Salihin and Awliya Allah, they kept. So you look good, you practice upon Shariah, you're not doing anything haram, and this gives you the guarantee of wisdom. Some people who do not keep beard, this is a very dangerous matter that I'm going to discuss now. Please listen to this carefully. This relates to Iman. They don't want to keep beard, and they become so daring that they mock at the people who have beard. Daadi walon ka mazak udate hain. And if somebody is trying to keep his beard according to Sharia, according to the Sunnah way, they mock at him, or they sometimes advise him, hey, you don't look good, man. Make it a little shorter, make it a little smarter. Do it this way, do it that way. So they're trying to discourage him not to do it the Sharia way, but the way it suits their desires. जो उनके नफ्स को अच्छा लगता है वो उस पर अमल भी करते हैं और उसका मशवरा भी देते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं. So now shaving beard was haram and it was guna, but mocking at beard का मजाक उड़ाना, this is insult of the religion. दाढ़ी का मजाक उड़ाना ये मजहब की तौहीन है, ये दीन की तौहीन है, ये हुजूर की सुन्नत की तौहीन है. I mean, this is an accepted fact. Whether you keep beard or you don't keep beard, this is another issue. But do you accept that beard is part of our deen? Yes. Alhamdulillah. So since you accept that beard is part of our deen, and if anyone mocks, makes joke of beard or people with beard, who is he mocking at? ये किसका मजाक उड़ा रहा है? ये मजहब की तजलील कर रहा है, ये मजहब का मजाक उड़ा रहा है.
तो उलमा इकराम ने फरमाया कि जो दाढ़ी का मजाक उड़ाता है उसने कुफ्र किया, उसका निकाह टूट गया, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई और उसको दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। वेरी सीरियस मैटर। नाउ सर के बाल, man has a choice to shave his head completely, or he can keep hair like zulf, the sunnat way, and have mang in between, and have a path in between, not on the right side or not on the left side. Divide the hair from the middle, half this way, half that way. This mark is sunnat mark. But a lot of people these days, they will follow the kafirs and the actors and the singers and all these worldly people, and they'll have mark from this side, left side, because they feel, that's a fashion. We look good, or we are more acceptable amongst the people. But trust me, people who do their mark from the middle, they look more beautiful and they look more handsome. But fashion है तो बस कर रहे हैं लोग. So you have a choice. Hazrat Maula Ali radiallahu ta'ala anhu used to shave head completely. And our Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, many Sahaba Ikram, they used to keep zulf. Subhanallah. And the zulf sometimes would come to the middle of the ears of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Trimmed straight. And the length would reach the middle of the ears. Sometimes it would reach to the earlobes, to the lower point of earlobes, and sometimes it would reach to the blessed shoulders of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. तीन साइज हो गए ना जी, कानों के दरमियान तक, कानों के नीचे तक और कंधों तक. So these three became sunnats of Rasulullah. Subhanallah. If you want to keep zulf up to the middle of the ears, is also sunnah. Up to the lower point of earlobes is also sunnah. And up to the shoulders mean touching shoulders, not lower than shoulders. That is also sunnah. So ये तीन साइज क्यों थे? इस पर भी उलमा इकराम ने बड़ी जबरदस्त मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू फरमाई कि sometimes when Zulf Mubarak was not combed, जब कंघी नहीं की होती थी, so the blessed hair will come to the middle of the ears or the earlobes. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's blessed hair were a bit curly, थोड़े curly थे, माशाल्लाह, हल्के से. सुभानअल्लाह. तो अब curly hair जब कंघी नहीं की होती, कॉम्ब नहीं की होती, तो वो ऊपर हो जाते. कंघी करो तो नीचे हो जाते. सुभानअल्लाह. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, when there was no comb being done, then would stay up to the middle of the ears or the earlobes, and when the comb was exercised, then it would reach the shoulders of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. सुभानअल्लाह. ये हमारे आका की सुन्नत थी और इसमें मुसलमानों को अमल करना चाहिए. ये जो अजीब से आजकल बाल बना लेते हैं, आजकल तो ये फैशन है ना, कटिंग फ्रॉम द साइड्स and having like a
peacock crown on the head. परिंदों के ऐसे ताज होते हैं, साइडों में कुछ नहीं, ऊपर सर में वो कुछ बाल निकले हुए होते हैं। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, आप चाहते हैं कि आप परिंदे बन जाए, अजीब शक्ल सूरत बना के घूम रहे हैं। If you see all these satanic movement people, उनके ऐसे बाल होते हैं अजीब अजीब से। और फिर उस पर मुसीबत ये, साइडों में तो काट लिए, ओनली इन द मिडल, और फिर उस पर जल लगाएंगे। अब जल लग गई तो वो और यूं खड़े हो गए, दे आर लाइक स्पाइक्स, कांटे जैसे सर पे लगाए हुए, वो स्पाइक बन गए। और ये समझ रहा है कि मैं खूबसूरत हो गया, तू तो बदसूरत हो गया है। You have lost your beauty, but you have evil friends who are praising your style. ये तुम्हें encourage कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, you very good now. तो अब वही दोस्त जो है ना, वो फिर कान में कोई बाली पहन लेगा, नाक में कोई बाली पहन लेगा, कोई अब तो piercing स्टार्ट हो गई, होंठों में, नाक में, गालों में, हर जगह पे। अब सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी कर रहे हैं। अच्छा भला अल्लाह ने इनको मर्द बनाया था, लेकिन इनको औरत बनना है। They want to have that women kind of style, वो फैशन हो जाए। औरतें मर्द बनना शुरू हो गई, मर्दों जैसे छोटे छोटे बाल, और औरतों ने, मर्दों ने औरतों जैसा बनना शुरू कर। ओके, अब ये तो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, हम थोड़े मसले डिस्कस करेंगे। टू रिमूव द ग्रे हेयर फ्रॉम योर बियर्ड स्पेशली इज मकरूह, and it's makruh tahrini, is close to haram. But if person is in the war situation, he is allowed to do that, so he can look much younger. जो जिहाद में उसके लिए जायज है कि वो सफेद वाले बाल निकाल दिया, उसके लिए ये भी जायज है कि काला खिजाब लगा ले जो जंग में है। लेकिन आम आदमी काला खिजाब लगाएगा तो हराम है, उसके लिए धोखा दे रहा है लोगों को, बुढ़ा है और लोगों पर जाहिर करता है मैं अभी तक जवान हूं, धोखा है ना। तो इसकी इजाजत नहीं है, इसलिए शरीयत ने सीधा सीधा काम रखा है हर मामले में। अब मेहंदी लगाओ, थोड़ा ब्राउन लगाओ, थोड़ा सुर्ख लगाओ, पता तो चलेगा कि ये हिस्सा सफेद हो गया है, ये हिस्सा अभी तक काला है। तो ये जो यूं करते हैं ना, ये नसारा का तरीका है, काफिरों का। ये जो बाल बनाते हैं, साइडों में काट के बीच में रखते हैं, ये ईसाइयों का, काफिरों का, जो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखते, ये उनका तरीका है। मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। Similar rule applies that women should keep their hair like women. See, the man's limit is up to the shoulders, and if woman keeps hair up to the shoulders, she's imitating men. And if a woman imitates men, there is curse of Allah on her. If man imitates women, there is curse of Allah on him. तो अब ये इनको इतने इतने रखने हैं, इससे भी छोटे रखने हैं। And men started keeping longer. If your hair after combing measured lower than your shoulder length, you are an open rebellious sinner.
वहां से मुअलिन हो के अपने गुनाह का ऐलान करते फिरते हो, लोगों पर जाहिर तो हो रहा है ना तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। लेकिन लोगों ने समझ लिया है कि ये कानून अवाम के लिए अलग है और होली मैन के लिए अलग है, पीरों फकीरों के लिए अलग है। सुनते हैं उलमा से बयान, सुनते हैं ये हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर कोई पीर के नाम से लंबे बालों वाला आ गया, उसके हाथ छूटेंगे, वो हजरत है। ये क्या सीखते हो? कौन सा दीन सीखते हो मस्जिद में जाकर कि जिस पर अमल नहीं कर सकते? क्या तुम्हें आलिम ने बताया था कि पीरों के लिए अलग कानून है और अवाम के लिए अलग कानून है? सबके लिए एक ही कानून। तो जब लंबे बाल रखना अवाम के लिए हराम है तो हर पीर के लिए भी हराम है। तो वहां जाके वो डर सा लगा, पता नहीं पीर साहब कोई पढ़ के ठोक देंगे और मैं जल जाऊंगा और मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी। ये पीर किसी तरह से नाराज ना हो जाए, चाहे जितने हराम करता हो। शरीयत को मजाक बना लिया सबने मिलकर, उन पीरों ने भी, उनके मुरीदों ने भी, और ये जो अवाम खाम खा की अकीदत जाहिर कर दिया, ये भी उस क्राइम का हिस्सा है। इतना पता नहीं है कि सही क्या और गलत क्या है। तो लिहाजा करना वही है जिसका सबक हमको शरीयत ने दिया। इंशाअल्लाह शरीयत से बढ़कर कोई नहीं है। नो पीर इज above शरीयत, नो सैयद इज above शरीयत, नो शाह साहब इज above शरीयत, no mufti, no alim, no professor, no doctor is above शरीयत। हर एक को शरीयत के नीचे रहना है। ये कानून है मेरे दीन का। अगर तुम इसमें पड़ गए, वो तो बड़े खानदान का है, वो तो बड़ी फैमिली का है, उसकी लिनेज देखो, अरे उसका खानदान देखो, तो वो क्रिटिसाइज ना करो, वो तो हजरत है, हजरत की औलाद है। फिर क्या सीखा है तुमने दीन के अंदर? तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं, सही गलत की पहचान नहीं। तो गलत को गलत नहीं कह सकते हो, किस वजह से? सही को सही नहीं कह सकते हो, किस वजह से? किसने लॉक लगा दिया तुम्हारी जुबानों पर? बहुत सारे लोगों की अब तबीयत ऐसी हो गई है, अरे हमें क्या पड़ी है, वो जाने उसका रब जाने। तो फिर वो जाने उसका रब जाने, तो फिर शरीयत ने क्यों बताएंगे हमको ये बातें कि ये सही है ये गलत है? अगर यही मामला होता कि वो जाने और उसका रब जाने, तो फिर शरीयत क्यों जाहिर करती हम पर कि ये सही है और ये गलत है? शरीयत ने इसलिए जाहिर किया हम पर ये सही है और ये गलत है, ताकि हम जान सकें और हम दूसरों को बता सकें, अपने और अपने दोस्तों और अपने माहौल वालों की तरबियत कर सकें। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी शरीयत के मुताबिक चलता है। सुन्नी का कोई काम शरीयत की मुखालिफत में नहीं होता, और जो शरीयत की मुखालिफत में काम करके अपने आप को सुन्नी जाहिर करते हैं, हम कहते हैं कि वो सुन्नी नहीं है। हम उनसे लाताल्लुक होते हैं, हम उनसे रिश्ता तोड़ते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं देते। अगर कोई जाकर कब्रों को सजदा करता है या कब्रों का तवाफ करता है, तो हम उसका दिफा नहीं करेंगे। उसने गलत किया, गंदा काम किया, हराम काम किया, वो खुद फेस करे, हम क्यों उसका दिफा करें? लेकिन जो मुतलकन मज़ारात की हाजिरी को हराम कहेगा, हम उससे मुनाजरा करेंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे। जो सही काम है उसको हम डिफेंड करेंगे, जो गलत काम है
उसको हम डिफेंड नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो लंबे बालों वाले पीर हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। जो शरीयत के मुताबिक पीर हैं, उन पर कोई हमला करता है तो उनके दिफा में हम अपनी जान भी देंगे। सुभान अल्लाह। ये सोच होनी चाहिए सुन्नी की, ना ये कि हर एक के पीछे आंखें बंद करके लग जाओ। कितने बद मजहब आते हैं हमारी मस्जिदों में, तकरीरें करके चले जाते हैं, जुमे पढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि वो पीर हैं और हम सब उनके पीछे यूं खड़े होते हैं। थोड़ा सा तो सीख लो अपने दीन को। चोट कर रहा हूं, हो सकता है तकलीफ हो रही हो कई लोगों को, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये बातें सच्ची हैं। हमारे चॉइसेस सही होने चाहिए। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग लास्ट वीक। आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया माशाल्लाह। मुझे खबर मिली है कि वो जो जरूरतें थी वो अल्लाह के फजल से पूरी हो गई। I knew our community